Hey guys, welcome back to my channel, and if you're new here, welcome to my channel. So I'm doing a series on my channel where I share with you some affordable eyeshadow palette from different brands. So this is another episode of that series. So the palette which I'm going to share with you in today's video is this one. This is from the brand MALIAO, I guess that's how you pronounce it. So this is their Glam 18 color eyeshadow palette, and guys, this palette reminds me of a very beautiful high-end palette. I'll share more about that palette in the video. So I'll be creating this eye look using this palette in today's video, and I'll also share my review about this palette with you guys in today's video. So if you are interested, please keep on watching this video. So today we are trying out this palette from the brand MALIAO. This is their Glam 18 color eyeshadow palette. So it comes in this kind of outer packaging. This is a transparent packaging, and on back of it all other details are mentioned about this palette. So I purchased this palette from Cuffs and Lashes, and it costed me 299 rupees. The shelf life of this palette is 4 years, and you get 20 grams of product in this palette, and all other details are mentioned on back of it. Like they have given some disclaimers, they have mentioned the ingredients and everything. And when you open this palette, this is how this palette looks like from inside. Again, details are mentioned on back of it. So the shade of this palette is 01. You can see here the shade is mentioned. So this is how this palette looks like. So you get these 18 colors in this palette. It has a combination of matte shades and metallic shades. Now let's see how this palette performs and how I created this look using this palette, and then I will share my review about this palette with you. So I have already prepped my eyes, so let's directly use this palette. So I'm taking this shade. Okay, so I see a little bit of kickback. If you see, there is a little bit of kickback, and थोड़े से पाउडरी हैं ये, एटलीस्ट ये शेड थोड़ा पाउडरी था. So I'm packing this color first and then I will blend it. So पिगमेंटेशन कलर की काफ़ी अच्छी है, एक साथ काफ़ी अच्छा पिगमेंटेशन आ रहा है. जब शेड्स ज़्यादा पिगमेंटेड होते हैं तो वो पैची लग सकता है. My lips are a little dry, so let me apply some lip balm. So here is the lip balm. This is Laneige lip sleeping mask. Now it feels good. So let's move on. Yeah, so I was saying कि अगर shadows ज़्यादा pigmented होते हैं तो they might look patchy और थोड़ा सा blending में मुश्किल हो सकती है. तो let's see कि ये कैसे blend होता है. Pigmentation तो काफ़ी अच्छी है इस shade की. मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ड्रैग कर रही हूँ बाहर की तरफ. बिल्कुल भी पैची नहीं लग रहा है ये, और बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजीली ब्लेंड हो गया है. यस, इट इज़ लुकिंग रियली नाइस, एंड पिगमेंटेशन तो इसका काफ़ी अच्छा है ही. नाउ आई एम टेकिंग दिस शेड एंड आई विल यूज़ दिस शेड एज माई ट्रांजिशन शेड. आई होप ये जो शेड है ये शो अप हो, क्योंकि ये काफ़ी कूल टोन शेड है. ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा शेड है, काफ़ी अच्छा ट्रांजिशन शेड है ये. अब सिंस हमको मैक्सिमम शेड यूज़ करने हैं इस पैलेट से, तो आई विल टेक दिस शेड नाउ एंड आई विल यूज़ दिस शेड टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ माई क्रीज कलर. तो मैं फिर से इसको अपनी क्रीज में ही अप्लाई कर रही हूँ, एंड आई एम इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ दैट क्रीज कलर. जो हमने पहले क्रीज में कलर अप्लाई किया था उससे थोड़ा सा डार्क शेड है, ये थोड़ा डार्क ब्राउन शेड है.
ये वाला शेड भी काफ़ी हाईली पिगमेंटेड है और बहुत इजीली ब्लेंड हो गया। यू कैन क्लियरली सी कि मेरा जो क्रीज में जो कलर है उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। आई अप्लाई दिस लिटिल बिट ऑन माई आउटर वीज। So I want to test this black color here, so next time using this black shade, and I will apply this on my outer V's. थोड़ा सा लैश लाइन के ऊपर, काफ़ी क्लोज टू लैश लाइन मैंने अप्लाई कर लिया। काफ़ी अच्छा पिगमेंटेशन था इस ब्लैक कलर का भी और इजीली ब्लेंड भी हो गया, तो ये काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है एक्चुअली ये पैलेट अभी तक। तो आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग अ कट क्रीज लुक, सो आई विल कट माई क्रीज फॉर दैट। I'll just increase the intensity of the crease color a little bit. Now I'm using this shade. This is actually calling my name. This looks so beautiful, so I'll use that shade, and I'm applying it using the fingers only. Wow, it's a beautiful shade. बहुत हाईली पिगमेंटेड नहीं है मेटालिक आई शेडो, बट स्टिल डिसेंट पिगमेंटेशन है। सो आई विल यूज अ ब्रश नाउ। मैंने अपने ब्रश को वेट नहीं किया है, डायरेक्ट अप्लाई किया है, स्टिल काफ़ी डिसेंट सी अच्छी सी पिगमेंटेशन मिल गई है। आई जस्ट ब्लेंड इट विद दिस black shade which I have on my outer V. Next I'm taking this shade, इसको just मैं थोड़ा सा इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। वाओ, such a beautiful shade. So I completed this eye and did my base makeup off camera. Now let's complete this eye look. So I'll apply the same color what I applied in my crease in my lower lash line as well. So I'll be using these two colors. I'm taking the darker orange color. I'm applying that close to my lower lash line. Now I'm taking that black color. Now I'm taking this color. I'll apply this color in my inner corners and I'll highlight my brow bone as well with this color. For liner, I'm using this liner from Wet n Wild. I'm really enjoying this liner nowadays. मतलब I forgot about it. मेरे को पता नहीं कैसे भूल गया मैं इस लाइनर के बारे में, and अभी रिसेंटली मैंने फिर से यूज़ करना शुरू किया इस लाइनर को, and it's a beautiful liner. Now for mascara, I am using this Maybelline Lash Sensational Mascara.
So yeah, this is the final eye look. I'll complete rest of my makeup and come back. So yeah guys, this is the final look and it is looking really beautiful. The color scheme of this palette is really beautiful and it reminds me of a very beautiful high-end palette. And that palette is this one from Huda Beauty. It's their Rose Gold Remastered palette. So let me show you both the palettes side by side. So you can clearly see that the color scheme of this palette, this MALIAO palette, is exactly similar to this Huda palette. So you can see all these shades are matching here, but just that the quality of these eyeshadows are not similar and the finish is also not similar. Matte shades जो हैं वो काफ़ी similar हैं, but ये जो metallic shade हैं, इसके जो metallic shade हैं काफ़ी buttery metallic shade हैं. So there is a difference in the finish of the eyeshadows. ये जो Huda Beauty के जो metallic eyeshadows हैं वो बहुत ही buttery हैं, जबकि ये वाले जो eyeshadow palettes हैं ये buttery हैं but थोड़े से इनमें थोड़ी सी पाउडरी फिनिश है. इतने सॉफ्ट, इतने बटरी सॉफ्ट नहीं है जितने कि हुडा ब्यूटी के आई शेडोज हैं. इसीलिए आपको जो कलर्स हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखेंगे बिकॉज जो टेक्सचर है वो थोड़ा डिफरेंट है आई शेडोज का. एंड जो मेटालिक शेड्स हैं उनका भी कलर्स काफ़ी मैच करता है. जैसे थोड़ा सा ये जो कलर्स ये जो हुडा ब्यूटी के पैलेट में है इसमें थोड़े से डार्क दिख रहे हैं शेड्स, बाकी जो कलर स्कीम है वो एकदम मैच करती है. Let me know if you want to see a detailed comparison video between Huda Beauty palette and this one from MALIAO. Now let's talk about this palette only in today's video. So we get these 18 shades here. बहुत ही beautiful से shades हैं. इसके अंदर आपको काफ़ी beautiful shades मिलते हैं. ये जो नीचे की पूरी रो है वो सारे matte shades हैं and these 3 shades are matte in this row. And then ये ऊपर की जो top रो है उसके अंदर सारे metallic shades हैं and these 3 are also metallic. So basically you get 9 metallic shades and 9 matte shades. ये जो पैलेट है ये बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करता है. मतलब जितने भी शेड्स मैंने इस पैलेट के यूज़ करे, मैंने बहुत ज़्यादा शेड्स में यूज़ नहीं कर पाई. आई यूज़ लाइक 1 2 3 4 5 6 शेड्स फ्रॉम दिस पैलेट और सारे शेड्स बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करे. ये जो मैट शेड्स हैं इनका पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छा है. थोड़ा सा किकबैक है बट बहुत ज़्यादा किकबैक नहीं, थोड़ा सा किकबैक मिलेगा आपको पैन के अंदर, बट ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उससे. मतलब इट्स फाइन, यू कैन जस्ट डस्ट ऑफ दैट excess powder from the shadow and then apply it, and it was very easy to apply, it was very easy to blend. बहुत ही easily blend हो गए थे आई शेडोज एंड काफ़ी अच्छा पिगमेंट है तो आपको बहुत ज़्यादा बिल्डअप नहीं करना पड़ता है, एक ही बार में आपको काफ़ी अच्छा पिगमेंट मिल जाता है. तो इसलिए आपको थोड़ा सा केयरफुल भी रहना पड़ेगा बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट एक साथ ले लेंगे और ये सिंस बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है तो पैच ही लग सकते हैं और आपका शेडो हो सकता है कि अच्छे से ब्लेंड ना हो. तो थोड़ा प्रोडक्ट लें, थोड़ा प्रोडक्ट लेके उसको एक्सेस को डस्ट ऑफ करें एंड देन अप्लाई करें एंड ब्लेंड करें तो बहुत ही इजीली, बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाएंगे. काफ़ी अच्छे से काम करते हैं एक दूसरे के साथ. मतलब सारे शेड एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो रहे थे. कोई भी फॉल आउट नहीं था. ये जो शिमर शेड है उनका थोड़ा सा मुझे फॉल आउट दिखा, बट आई गेस दैट्स फाइन बिकॉज जो शिमरी शेड्स होते हैं उनमें थोड़ा सा फॉल आउट होता है. और ये जो मेटालिक शेड्स हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हैं बट ये थोड़े से पाउडरी भी हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा फॉल आउट मिलता है. एंड ये मेटालिक शेड्स का जो पिगमेंटेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है. मैंने फिंगर्स के साथ इसको अप्लाई किया तो पता नहीं क्यों मुझे उतना ज़्यादा पिगमेंट नहीं मिल रहा था, बट मैंने जब इसको ब्रश के साथ अप्लाई किया तो बहुत अच्छा पिगमेंट मिला. जनरली इसका ऑपोजिट होता है, जब आप ब्रश से, ड्राई ब्रश से जब अप्लाई करते हैं मेटालिक शेड तो उतना अच्छा पिगमेंटेशन नहीं मिलता है, बट अगर आप फिंगर्स के साथ या वेट ब्रश के साथ अप्लाई करते हैं तो काफ़ी अच्छा पिगमेंट मिलता है. बट आई डोंट नो व्हाई इसके साथ थोड़ा अलग परफॉर्मेंस थी. मतलब जब मैंने इसको ड्राई ब्रश के साथ अप्लाई किया तो काफ़ी अच्छा पिगमेंटेशन मिल रहा था. वेट ब्रश के साथ मैंने ट्राई नहीं किया बट आई थिंक और भी ज़्यादा अच्छा पिगमेंटेशन मिलेगा अगर आप अपने ब्रश को थोड़ा सा वेट कर लेंगे, डैम्प कर लेंगे. बट पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छे से शो अप होते हैं आइज़ के ऊपर. यू कैन सी, मतलब मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था इस पैलेट के साथ. दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग समथिंग फ्रॉम दिस ब्रांड MALIAO. मैंने इससे पहले इस ब्रांड का आई थिंक कुछ भी ट्राई नहीं किया है. सिंस आई वॉज लुकिंग फॉर सम अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट एंड आई सॉ दिस पैलेट ऑन कफ्स एंड लैशेस, तो अच्छा भी दिख रहा था पैलेट तो आई थॉट ऑफ बाइंग इट. एंड दिस पैलेट ओनली रिटेल्स फॉर 299 रुपीज़ एंड यू आर गेटिंग दीज 18 आई शेडोज इन दिस पैलेट. एंड मैंने 6 ही यूज़ किए हैं बट आई थिंक एंड आई फील कि बाकी जो भी आई शेडोज़ हैं इसके अंदर, बाकी जो 12 आई शेडोज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते होंगे. जैसे ये 6 आई शेडोज़ परफॉर्म किए वैसे ही अच्छे से परफॉर्म करते होंगे. एंड बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेट है. इसके साथ आप काफ़ी लुक्स क्रिएट कर सकते हैं. लाइक यू कैन सी इसके अंदर आपको ये न्यूड शेड्स मिल रहे हैं तो आप बेसिक लुक क्रिएट कर सकते हैं. आप
इतने सारे मेटालिक शेड्स मिल रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छे पार्टी लुक्स क्रिएट कर सकते हैं. सो यू कैन क्रिएट सॉफ्ट ग्लैम, अल्ट्रा ग्लैम and smoky look as well. You can create, like you are getting this very beautiful black shade. इसका काफ़ी अच्छा पिगमेंटेशन है. ये शेड मिल रहा है आपको, ये डार्क ब्राउन शेड मिल रहा है, तो स्मोकी लुक्स भी क्रिएट कर सकते हैं. तो क्लियरली आप बहुत सारे लुक्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दिस पैलेट. And I'm also planning to create many more looks using this palette. I'll maybe share all those looks on my Instagram, so you can follow me on my Instagram for those looks. I'll mention my Instagram ID on the screen and in the description box for you. So overall, this is a really good palette. In 299 rupees, you are getting really good stuff. This is available on Cuffs and Lashes, I guess. मुझे मालूम नहीं है अगर ये कहीं और भी अवेलेबल है तो आई एम नॉट श्योर. हो सकता है ये आपको किसी लोकल स्टोर में भी मिल जाए, लोकल ब्यूटी स्टोर में मिल जाए, बट आई एम नॉट श्योर. मैंने इसको Cuffs and Lashes से परचेज किया है एंड इट इज़ अवेलेबल देयर. सो यू कैन, इफ यू वांट टू परचेज, you can purchase from Cuffs and Lashes. So overall, this is a really beautiful palette and you can totally go for this palette if you are looking for some affordable eyeshadow palette. Yeah guys, that's all for today's video. I hope you liked this video and it was helpful for you. If you did, please like and share this video. Also, please subscribe to my channel if you haven't done already, and don't forget to press the notification bell so that you will be notified for my future uploads. Let me know in the comment box if you want me to try any other eyeshadow palette, any affordable eyeshadow palette, or any kind of eyeshadow palette. If you want me to try, please let me know in the comment box. So yeah guys, thank you so much for watching this video. I'll see you in my next one. Till then, take care. Bye.